lost his line there, the JM spokesperson. I will try to bring back my colleague Shakti also with us on the broadcast. But Binod Sharma ji, as we're speaking, sir, JM Plus, which includes the Congress, has now won the floor test in the Jharkhand Assembly. What are the next steps, though, as far as Hemant Soren? I see Mr. Arvinder Singh Deol, in fact, back with us. Mr. Deol, if your connection is a little bit stable now, sir, if I can take a question with you. Mr. Deol, can you hear me? Okay. Okay, we don't have a stable connection. We'll try to bring him on the phone line if we can. But Mr. Binod Sharma, what really then becomes the next step here for Hemant Soren, who will continue to now face the Enforcement Directorate and possibly be in jail as well? देखिए, मामला न्यायालय में है। आदरणीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। हाई कोर्ट में जो निर्णय होगा उसको हम मानेंगे और निश्चित रूप से झारखंड के विकास के लिए हमारा इंडिया गठबंधन जेएम के नेतृत्व में काम करता रहेगा। वह मजबूती से काम करेगा और निश्चित रूप से सच्चाई सामने आ जाएगी। बहुत दिनों तक आप सच्चाई को नहीं दबा सकते हैं। यह स्पष्ट है कि वहां पर पूरी तरह से फंसाया गया हेमंत सोरेन जी को। कोई भी प्रमाण नहीं है, लेकिन जबरन प्रमाण बनाए गए हैं, दुनिया देख रही है। और हेमंत सोरेन जी ने जो दावे किए हैं उसको झुठलाया नहीं जा सकता है। कागजों में उनके कहीं नाम नहीं है, कहीं खरीद बिक्री में उनके नाम नहीं है। दूसरे लोगों के साथ जबरन इनका नाम जोड़ा जा रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए। और जो लोग कर रहे हैं, ईडी आज इतनी बदनाम और सीबीआई हुई है, जब आज तक इस देश में इतनी चर्चा में नहीं आई थी, क्योंकि कहीं न कहीं से दबाव में काम कर रही है। पूरी तरह से विश्वसनीयता समाप्त हो रही है ईडी सीबीआई का, जो लोग देख रहा है। आज हेमंत बिस्वा शर्मा को गिरफ्तार नहीं कर रही है, उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। अजीत पवार को लाकर के, छगन भुजबल को लाकर माला पहनाते हैं प्रधानमंत्री। 3 दिन पहले तक कहते हैं कि चोर है, पूरे देश को लुटा, इसको जेल भेजेंगे। और 3 दिन के बाद ही वो किस पाउडर में धुलते हैं, कैसे वॉशिंग पाउडर में धुल देते हैं कि पूरी तरह से वो स्वच्छ हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से देश की जनता जवाब मांगेगी आज लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री से कि आप 2 तरह की नीति क्यों अपनाते हैं। अपने साथ जो लोग हैं उनको पूरी तरह से आपने छोड़ रखा है देश को लूटने के लिए, और वो स्वच्छ हो जाते हैं। और जो लोग सही हैं, जो सही काम कर रहे हैं, आपके पार्टी का विरोध कर रहे हैं, आपका जो एनडीए गठबंधन का विरोध कर रहे हैं, उनको आप फंसाने का काम कर रहे हैं। ये नीति बहुत दिन तक काम नहीं करेगी। और निश्चित रूप से एक से एक अहंकारी शासक आए और गए हैं इस देश, और जनता ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं किया है। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को अभी भी सचेत होना चाहिए, ऐसे घटनाक्रम से बाहर रहना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट प्रधानमंत्री पर आरोप लग रहे हैं पूरे देश में कि प्रधानमंत्री के देखरेख में हमारे मुख्यमंत्रियों को, हमारे नेताओं को जबरन फंसाया जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार कराया जा रहा है, और ये बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला है। Okay, all right. We also have with us Pratul Shah Deo of the BJP on the broadcast. Pratul ji, आपने Binod Sharma of the Congress, I'm sure you've heard what he's had to say. Now, Champai Soren-led government has proved its majority on the floor of the House. So the government of JM Plus continues to be intact in Jharkhand. But Hemant Soren says that he'd much rather be in jail and face the ED rather than bowing down to these pressure tactics of the BJP. How does the BJP respond, sir? They may have won the trust vote, but they have lost the trust of the Jharkhand and citizens of Jharkhand. And see, Jharkhand got defeated the day when the chief minister went missing for 40 days, much like any fiction thriller. He was traceless for 40, I beg your pardon, for 40 hours. There was no trace of him. The Rajbhavan was not aware about its whereabouts. Even the chief secretary and DGP were summoned by His Excellency, and they were also very unaware about where the chief minister was. He was like a fugitive on the run. I'm talking about the ex-chief minister Hemant Soren, who then ultimately had to resign after the ED arrested him. So they may have won the trust vote. We never said that this government doesn't have the majority. Our fight was for a larger picture, that the corrupt Hemant Soren government must go. And you see, there is an allegation of staggering 70,000 crore corruption case against Hemant Soren government, which was there. And it's very unfortunate that the new incumbent chief minister, Champai Soren, is saying that he will further the legacy of Hemant Soren. So he's talking about probably taking that corruption to another level. And even the atrocity against women and unemployment have been at the highest in the 24 years of the state. So probably he's talking about that legacy. So they may have won the trust vote. But believe me, the game has just begun, because there are so many disgruntled Congress and JMM MLAs who all want to be ministers. So after they expand the cabinet, the real game will begin. But it's very sad
for Jharkhand that a chief minister had to be arrested and a chief minister had vanished for 40 hours. And the Congress is defending, saying that, the Prime Minister is responsible. Probably they're talking about their own years where the agencies used to be run from the Congress headquarters. This is Modi's new India. We don't have agencies, agencies run on their own will. And also, if you could remember famously, the Supreme Court quote that CBI is like a caged parrot during the UPA tenure. So all in all, he's speaking from his own experience. And the Congress also has the dubious distinction of having dismissed elected state governments on more than 100 occasions using Article 356. So trust vote, yes, they may have won, but yes, the people of Jharkhand have lost. Okay, all right. Let me bring back Mr. A.K. Jha into the conversation. Mr. Jha, what do you make now of the political scenario in Jharkhand? Like I said, and we've also addressed the fact that the JM Plus have proven their majority, so they will continue to be in power. But does a Hemant Soren facing the enforcement directorate or a possible jail term somewhere now dent the credibility of the JM Plus? Oh yes, of course. It all depends upon how court takes course, how it all happens in the court. If Hemant Soren gets any reprieve from court, then there is a probability and chances that he would be returning as Chief Minister once again. But since we are not sure how things are going to take course in future, and only after how High Court takes up the issue and what kind of judgment it gives, and later on how things move on, as it has been happening, that it always goes to Supreme Court also. So we don't know actually how things are going to turn. But as it is now, it seems that Champai Soren will continue at least for some time, unless and until Hemant Soren himself proves that he had been wrongly arrested and wrongly charged, which seems to be very unlikely given the scenario. So I think Champai Soren will be leading the government, but of course in suggestion with what Hemant Soren has been doing. And as a matter of fact, it was never in doubt. The majority of this alliance was never in doubt. The only doubt crept in when we came to know that there was some disruptions, there was some kind of what you can say, family members were not in support of the Champai Soren. So there was a likelihood of that Champai Soren may not get all the numbers which Jharkhand Mukti Morcha commands at the moment. But in the floors test, we did not find any kind of such dichotomy. Things were there, they got through. So at the moment, I think the government will continue to hold, and Champai Soren will have to lead the castle. Okay, Binod Sharma ji, Pratul Shah of the BJP says that even though the JM Plus, which includes the Congress, has won the floor test, he says that the people of Jharkhand have lost because a corrupt government then continues to allegedly be in power. How does the Congress party respond to these allegations? बीजेपी प्रवक्ता ने यह नहीं बताया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी कौन सा वॉशिंग मशीन रखते हैं जिसमें अजीत पवार, छगन भुजबल जैसे दर्जनों भ्रष्टाचारी 2 दिन में भ्रष्टाचार मुक्त हो जाते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा पर, जिस पर सीबीआई केस चल रहा है, उसको बचाया जा रहा है मुख्यमंत्री आसाम को। तो ये दो तरह की पॉलिसी प्रधानमंत्री की देश की जनता और झारखंड की जनता देख रही है। झारखंड की जनता जानती है कि आदरणीय शिबू सोरेन जी ने झारखंड के लिए कितना बड़ा काम किया है। आज झारखंड बनाने में उनका आदिवासियों के विकास के लिए उन्होंने कितना योगदान दिया है, हेमंत सोरेन जी भी उसको निर्वहन कर रहे हैं। आज गरीबों, दलितों की आवाज, आदिवासियों की आवाज बने हुए हैं, और झारखंड के लोग जानते हैं कि हमारे नेता को जबरन फंसाया जा रहा है, जबरन गिरफ्तार किया जा रहा है। भाजपा वाले लाख बात बना ले, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा स्पष्ट हो गया है कि वो जानबूझकर किसी को प्रताड़ित करते हैं, जो उनके खिलाफ है उनको गलत केसों में फंसाते हैं। एक नहीं दर्जनों उदाहरण है जिसका जवाब भाजपा के पास नहीं है। भाजपा ये साबित करे कि क्या भ्रष्टाचार से मुक्त हो गए हैं अजीत पवार, क्या उन पर सारे केस खत्म हो गए हैं? छगन भुजबल जेल में नहीं रह के आए थे क्या? उनके मुख्यमंत्री जो अभी हैं आसाम के, उन पर केस नहीं है? तो ऐसे दर्जनों, एक नहीं दर्जनों हैं भ्रष्टाचारियों के सम्राट बने हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। पूरे देश में जितने भ्रष्टाचारी हैं इनके शरण में जाते हैं और एक दिन में स्वच्छ हो जाते हैं।
तो ऐसी पॉलिसी देश को नहीं चाहिए। देश की जनता जानती है कि जो आप कहते हैं वो कीजिए, लेकिन आप कहते कुछ है और करते कुछ है। देश ने देखा है कि राम मंदिर में किस तरह से आप चारों शंकराचार्यों को धत्ता बनाकर आप अपनी छवि निखारने के लिए जबरन राम जी की मूर्ति का प्रतिष्ठापन किया। क्या सनातन धर्म का यह सम्मान है? सनातन धर्म और शास्त्र संगत बात नहीं थी। तो प्रधानमंत्री जब शास्त्र संगत बात नहीं मानते हैं, जब हमारे जगत गुरु शंकराचार्य को नहीं मानते हैं, तो आम जनता को क्या ध्यान में रखेंगे? क्या मुख्यमंत्री को ध्यान में रखेंगे? और निश्चित रूप से जो कर रहे हैं अपने लिए, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। और निश्चित रूप से वह सारी चीजें परिलक्षित हो रही हैं। प्रधानमंत्री के कथनी और करनी में कहीं एक रूपता नहीं है। बार बार वो कहीं प्रतिशोध की भावना से काम करते हैं। और सारे देश के लोग अपना क्या, आज आडवाणी जी को सम्मान दिया है। आडवाणी जी को कितना अपमानित करवाया था जब इनको प्रधानमंत्री का घोषणा किया गया कि होंगे, उनके घर पर ढेले चलवाए थे। तो न अपना पराया किसी को नहीं देखते हैं। प्रधानमंत्री जी अपने लिए जो भी करते हैं सब क्षम है उनके लिए, चाहे गलत हो या सही हो। लेकिन देश की जनता सारी चीजों का समय पर जवाब देती है और समय आ चुका है इनका। इस बार निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सारे जो कारनामे हैं उनका जवाब देश की जनता देगी। Okay, all right. I'm going to leave the last word with the BJP spokesperson, Mr. Pratul Shah. You've heard what the Congress party has had to say. How does the BJP respond? Well, they're master of Congress school of lying. See, this is the letter from two Shankaracharya, which actually supports the Ram Lalla Pran Pratishtha. So now, since we are not talking about the Ram Mandir, I'll not deal much into it. But let me just remind you one fact. This is the very party which on 13th September 2007 had denied the existence of Ram Lalla in an affidavit in Supreme Court in Ram Setu case and had called Ramayana a work of fiction and Ram Lalla a cartoon character. Now they talk about Ram. Now let's come back to Hemant Soren and what has actually happened in Jharkhand. See, there is no tolerance towards corruption, and if the ED has had done seizures of more than 1,25,000 crore rupees in cash and illegal properties in the last 9.5 years, so we have been hitting at the corruption, and if most of the corrupt people are in their kitty, so it's not our blame game. And one final thing which I'd like to put on record on your channel, that no cases have been withdrawn against any political leader who has joined hands with us. And what stops them from going and filing a petition in the court, High Court and Supreme Court, that Ajit Pawar case has been closed, you reopen it. The case is not closed at the first instant. They were partners with him about a few months back. So when they were partners with him, everything was okay. Now coming back to Hemant Soren, what has actually happened in Jharkhand is unparalleled. A CM goes faceless for 40 hours and without any clue, the state becomes headless. And 70,000 crore rupees, can you imagine? That is the amount of loot he has done. And it's a case of corruption, not a public agitation, as our Congress friend is trying to make it out to be. So corruption has a caste. I did not know this. IPC, there is no provision of cases under various religion and various castes and any relief for any particular caste. Our Prime Minister, when he was the Chief Minister of Gujarat, faced the SIT in Godhra case for more than 10 hours. He never played the backward card, and Lal Krishna Advani, Murli Manoj Joshi faced the CBI inquiry. We never claimed the victim card. We had full faith in the agency, right, full faith in the court of land. But I tell you, what has happened today in Jharkhand, ultimately the people of Jharkhand have been defeated. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.